Hello students, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Today we are going to study about transport. What is transport first? Transport is a process in which a substance is absorbed by one part of the body and its brings to carry to different parts of the body. It's called transport. Suppose oxygen is absorbed in the lungs by capillaries in the blood, and blood brings the oxygens from lungs to the different parts of the body. That is called transport. Same as in plants, the water and minerals absorbed in the roots by root hairs, and that water and minerals brings to the different parts of the plants. That means leaves, fruits, stems. That is transport. So come on the definitions. Transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to the other parts of the body. That is called transport. Now, transport in animals and transport in plants are completely different, because the transport in animals mainly involves transport of oxygens, transport of the food, digested food molecules, transport of the CO2 molecule, waste products, and many different types of the hormones in the animals. But in the case of plants, transport of oxygen and CO2 is not an important process, because the different parts of the plants, root, stem and leaves just absorbs and release the CO2 and O2s, and only little transport of the oxygen and CO2 in the plants taking place. But in the plant, transport of water, transport of minerals and foods is very important, because it takes a long distance. So transport of animals and transport of plants is completely different. So we can study these two transports, that means transport of plants and transport in animals, in different classes and in different sections. Now today we are going to discuss about the transport in plant. Now transport in plant is less elaborate than in animals, because plant is a simple animals and animal is a complex organisms. Plant is a simple organisms, but animal is a complex organisms. In plant, simple tissues, only meristematic tissue and some permanent tissues are present, but there are many types of the tissues present in the animals. So transport in plant is less elaborate than in animals. Transport in plant only taken place of some substances such as waters, minerals and foods. So these substances are transported in plants by vascular systems. Vascular system is also called the transport systems. Transport system is also called the conducting systems. This is transport system, vascular system and conducting system. And these systems is made up of vascular tissue, such as vascular tissue are two types, xylems and phloems. Xylem and phloem is also a type of complex permanent tissue.
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वैसे टिश्यू जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जब सेल्स होते हैं तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यह जाइलम एंड फ्लोएम्स, these two are the complex permanent tissue and vascular tissue या conducting tissue भी इसे कहा जाता है। जाइलम्स जो है that transport only water and minerals from root to the shoots of the plant, but phloem transports only food molecules from लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वहाँ से वो बॉडी के प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट द फूड ट्रांसपोर्ट इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जाइलम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। दैट मीन्स 4 तरह के इसमें सेल्स से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 वेसल्स, नंबर 2 ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स इज ए ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड द बोथ एंड्स ऑफ द वेसल्स आर ओपन। यह ओपन होती है इसकी दोनों एंड्स, एंड एनुलस रिंग्स आर प्रेजेंट around the vessels, and there are many pits present on the vessels. Pits, what is pits? Pits is a area or region on the cells where cell wall is thin or cell wall is completely absent, only plasma membrane is present on the cells. That region is called pit. It's vessels mainly involved in the transport of water from root to the shoot. Tracheids is a spindle-shaped structures. The both ends of the tracheids are taperings. वो दोनों ends उसकी tapering होती है, pointed होती है, and tracheids are longer than the vessels, but यह जो ट्रैकिड्स होती है वह वेसल्स की तुलना में वह थोड़ी थिन होती है। जाइलम फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रैकिड्स also involved in the transport of water. यह ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये दोनों आपस में एक साथ कंबाइंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, नियर बाई या नेबरिंग सेल्स की तरह रहते हैं। वेसल्स, एक वेसल्स के ऊपर दूसरा वेसल्स होता है, जैसे पाइप, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप अरेंज कर देते हैं हम लोग, उसी तरह से वेसल्स अरेंज रहती है और एक वाटर चैनल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ट्रैकिड्स इसके बगल में रहती है। जाइलम फाइबर्स होते हैं, वह जाइलम फाइबर्स यह वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। इट्स ओनली प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। जाइलम फाइबर्स यह मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जाइलम पैरेन्काइमा इज ए लिविंग सेल्स। यह जाइलम पैरेन्काइमा न्यूक्लियस एक्टिव रहता है। Vessels, tracheids and xylem fibers, these 3 are the dead cells, but only xylem parenchyma is a living cells. Now the question is that इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स में वाटर रूट से जो सॉइल के नज़दीक है, सॉइल के नज़दीक जो वाटर का सोर्स है, वहाँ से वाटर प्लांट के टिप्स तक, इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है? हाउ द वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू द शूट टिप्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 साइंटिस्ट, डिक्सन एंड जॉली, दोनों साइंटिस्ट ने जो है इस पजल्स को
how the water transport from root to the shoots of a long plants. That puzzle can be solved by two scientists, Dickson and Joly. या डिक्सन एंड जॉली, ये दो साइंटिस्टों ने जो कंसेप्ट दिया उसको ये समझते हैं यहाँ पर। इस डायग्राम को फोकस कीजिए। इस डायग्राम में यह प्लांट का एक डायग्राम है। दिस वन इज द रूट हेयर्स, सॉइल पार्टिकल्स, स्टेम्स एंड ये लीफ है। इस लीफ में देयर आर, इसके सरफेस पर देयर आर मेनी पोर्स, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, and that pores is called the stomata. Whenever the stomata will open, then the water molecules removed through the stomata in the form of vapor in environments or air. जब स्टोमाटा ओपन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, and that process is called transpiration. जब यहाँ पे वाटर रिमूव हो गई वेपर के फॉर्म में, तो इस सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है और बगल वाली सेल से वाटर लेता है, वहां से कमी होती है और लीफ के जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर लीफ के जाइलम में वाटर की कमी होती है, देन दैट वाटर scarcity of water can be fulfilled by the xylem of stems. And again, the scarcity of water in the xylem of the stem can be fulfilled by the xylem of the roots. रूट के जाइलम से वाटर फुलफिल हो जाता है। फिर यहाँ पे कमी हो जाती है वाटर की, वह इंडोडर्मिस के रूट के इंडोडर्मिस एब्जॉर्ब होती है। फिर रूट के इंडोडर्मिस में वाटर की कमी होती है तो कॉर्टेक्स से वाटर एब्जॉर्ब करता है। कॉर्टेक्स से फिर इपिडर्मिस से वाटर फिर कॉर्टेक्स में चली जाती है। फिर और अगेन जब इपिडर्मिस में वाटर की कमी हो जाती है तो वह रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर में वाटर की कमी होती है, वह सॉइल पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से जब ट्रांसपिरेशन होती है तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ वाटर की कमी हो जाती है, उसको ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। और वहीं ट्रांसपिरेशन पूल के चलते सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होती है और धीरे धीरे वाटर अपवार्ड मूव करती है। जब अपवार्ड मूवमेंट होता है वाटर प्लस मिनरल्स, तो उस वाटर और मिनरल्स अपवार्ड मूवमेंट को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। वाटर प्लस मिनरल्स, इस दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, दैट नेम इज सैप। So the upward movement of water and minerals in plant is called sap. And how the upward movement of water and minerals in plant is called ascent of sap. And how the ascent of sap will occur due to ट्रांसपिरेशन पुल्स। जब तक ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तब तक वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल ऑफ द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन यदि नहीं हो रहा है तो वाटर का मूवमेंट अपवर्ड नहीं होगा, और यदि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया और उस केस में सॉइल में यदि वाटर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशंस में वह प्लांट का लीफ विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा, प्लांट की डेथ हो सकती है। इसलिए यह ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। नाउ कम ऑन द टॉपिक फ्लोएम। Phloem it transport the food molecules in the plants from leaves to the all parts of the plants. There are four components of the phloems: seed tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Among four, phloem fiber is a dead cells and the rest of the three are living cells. Sieve tube is a tube-like structures, but their both ends are perforated and act as a sieve plate. चलनी सिप को
हिंदी में चलनी कहा जाता है. So the name of this tube is sieve tubes, but the sieve tube is a living cells. But in case of sieve tubes, there is no any nucleus and the cytoplasm. But how sieve tube is a living cells? Because due to companion cells. कंपेनियन सेल्स इस sieve tube से डायरेक्टली पीट के द्वारा अटैच रहता है. And the nucleus of this one is the companion cell, and the nucleus of the companion cells control the activities of the sieve tubes. That's why sieve tube is a living cells. तो sieve tube और companion cells ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं. sieve tube भी एक ट्यूब के ऊपर दूसरा ट्यूब्स अरेंज रहता है और यह बंडल में अरेंज रहता है, और यह भी एक तरह का चैनल बना लेता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए. और फूड का ट्रांसपोर्ट में मेनली इन्वॉल्व होता है sieve tubes. Phloem parenchyma is a living cells. It also transport the foods from the neighboring cells, same as in the xylem parenchyma भी यह लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का. उसी तरह से phloem parenchyma is also involved in the lateral transport of the food. Phloem fiber only provide the mechanical support to the plant parts. Now the transport of food in plant is called translocations, and the translocation of food occurs in the form of sucrose. Sucrose is a disaccharide and it is made up of two molecules of the glucose, या दो मोलिक्यूल ग्लूकोज या ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर के सुक्रोज बनता है. और सुक्रोज जब बन जाता है तो सुक्रोज के फॉर्म में ही फूड का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में. नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो प्लांट में फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स. नाउ सी दिस स्ट्रक्चर्स. दिस इज a sieve tubes. These structures present in the leaves of a plant. This is a sieve tubes, parts of the phloems, and this is the mesophyll cells. मेसोफिल सेल्स में हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होती है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. फोटोसिंथेसिस होती है, फूड का फॉर्मेशन होता है. इस सेल्स में फूड का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू टू मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज combined and converted into sucrose. Sucrose is a big molecule than glucose. तो यह एक सेल से दूसरे सेल से मूव नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है एटीपी के रूप में, एंड सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द sieve tubes. यह sieve ट्यूब में यह फूड आ गया, सुक्रोज आ गई. अब यहाँ पर नेबरिंग सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर जाते हैं, क्योंकि इसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कर जाती है. वाटर मॉलिक्यूल इसमें इंटर कर जाते हैं sieve tubes में. तो sieve ट्यूब में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के द्वारा इंटर कर जाता है. तो इस sieve ट्यूब में इस रीजन्स में हाई प्रेशर हो जाती है. जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर्स और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पर भी लो प्रेशर्स. तो हाई प्रेशर से फूड मॉलिक्यूल लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लो प्रेशर वहाँ पे होगा जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे. तो इस तरह से एनर्जी खर्च होती है, हाई प्रेशर हो जाती है यहाँ पर, और लो प्रेशर की तरफ यह फूड मॉलिक्यूल मूव कर जाता है. यानी कि यह फूड मॉलिक्यूल्स रूट की तरफ भी मूव कर जाता है जहाँ पे वहाँ उसकी ज़रूरत है, या सीड्स में भी, फ्रूट्स में भी, फ्लावर्स में भी, शूट टिप्स में भी, या ग्रोइंग सेल्स की तरफ यह मूव कर जाता है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स.
In the next class we will study about the transport in animals. Okay, thank you for watching this video.